Hello friends, this is Bodhisattva and I am Praveen Besala presenting here the first topic of the science and technology. In the coming series, I'm gonna discuss the emerging technologies, and one of those emerging technologies is big data. So in this video, we're gonna discuss that what is a big data, what are the characteristics of the big data, and what are the various applications of the big data. So first of all, a question came in our mind, that is, what is data? Data is simply data is simply any information. Either it is your phone number, either it is your email ID, your name. Simply, these all things are a data, which is simply an information. So, what is big data? So, for For big data, if we see, big data refers to a large volume of the data. That is, large volume of data. That is both structured, unstructured, beyond the ability of the common use software tools to capture, curate, manage, and process a within tolerable time. दैट मीन्स कि बिग डाटा इज़ अ इमेंस डाटा, बहुत सारा डाटा जिसको कि क्या किया जाए, प्रोसेस किया जाए और उसमें से यूज़फुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाए. एंड वन थिंग दैट इज़ टू बी रिमेंबर, इट हैज़ टू बी डन इन अ टॉलरेबल एलेप्स टाइम. मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम में उसको किया जाए जिससे कि वो जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाए उस इन्फॉर्मेशन का क्या रहे, सिग्निफिकेंस रहे. And then, what is the aim of this big data? Analyzes data for insight that leads to the better decision making in strategic business move. See, if we see the business we do, if we are having the good quality of the data, that means we can expand our business, or we can conduct our business very efficiently. Then moving to what are the steps of the big data. There are the following steps. If you see, first of all, we have to integrate a large number of the data, which are structured data like enterprises data, and unstructured data like आपके documents, video, and semi structured data जो transactions वगैरह आप जो लोग करते हैं, कहीं आप sites वगैरह जो चलाते हैं जहाँ पर आप orders करते हैं, इस सब को जो काफ़ी सारा डाटा रहता है. तो बिग डाटा के अंदर जो फर्स्ट स्टेप रहता है, दैट इज़ गोइंग टू बी द डाटा इंटीग्रेशन, दैट इज़ कलेक्टिंग द इमेंस डाटा एंड देन मैनेजिंग दैट डाटा. सेकेंड स्टेप इज़ मैनेजिंग दैट सेकेंड स्टेप इज़ दैट मैनेजिंग दैट डाटा. डाटा मैनेजमेंट, आपको उस डाटा को मैनेज करना है. मतलब आप उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है कि दैट what is structured data, what is unstructured data, and what is सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा. एंड फिर आप उस डाटा को क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे, एनालाइज, दैट कम्स इनटू द एनालिटिक पार्ट. एंड आफ्टर द एनालिसिस यू विल, और ये सब आप फ्रेंड्स याद रखिए कि दैट हैज़ टू बी डन इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. And after the analysis you will produce result out of that data, result out of the data that can be utilized for any purpose, like for the business efficiency, for the business expansion. If we take a simple example, अगर हम एक काफ़ी कॉमन एग्जांपल लें, देन टेक एन एग्जांपल कि आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को रन करते हैं एंड आप एक कॉलेज के सर्वे में जाते हैं एंड देयर यू कलेक्ट द डाटा ऑफ द स्टूडेंट्स. आप जिसमें फर्स्ट ईयर का डाटा कलेक्ट करते हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं, एंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं. उस डाटा के अंदर उनका नाम, ईमेल आईडी, ट्वेल्थ तक उन्होंने क्या पढ़ाई की, एंड देन वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं, उनका फ़ोन नंबर, एंड द प्लेसेस दे बिलोंग्स. इस तरीके से आपने 5-6 पॉइंट्स में हर स्टूडेंट की लगभग आप मान लीजिए आपने 500-600 स्टूडेंट्स का जो है डाटा वो कलेक्ट किया. देन आप अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं और वहाँ पर उस डाटा को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं. वहाँ पर आप उस डाटा को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे. एंड हाउ टू मैनेज दिस डाटा, कि आप उसको डिफ्रेंशिएट सेग्रीगेट करेंगे कि हाँ भाई ये फर्स्ट ईयर का डाटा है, एंड सेकेंड ईयर का डाटा है, एंड थर्ड ईयर का ये डाटा है. एंड फिर उसमें ये देखेंगे कि कौन
कि जिसे आपने उसमें फिलअप करवाया था कि व्हाट अ पर्सन वांट्स टू डू आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, तो आप उसमें देखेंगे कि द वन हु आर इंटरेस्टेड इन द सिविल सर्विसेज। तो वहाँ पर आपने क्या किया, डाटा को एनालाइज किया। एंड देन रिजल्ट, इंफॉर्मेशन, आपने जो एनालाइज किया कि कौन कौन इसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कौन कौन इंटरेस्टेड है सिविल सर्विसेज के लिए, देन यू आर मेकिंग दैम कॉलम, देन यू आर मेकिंग दैम कॉल। और अब ये कॉल भी कहाँ से आप कर रहे हैं कि क्यों, आपने पहले जो डाटा कलेक्ट किया है वहाँ पर जाकर आपके पास ऑलरेडी कॉल नंबर्स, फ़ोन नंबर्स सबके मौजूद हैं। फिर आप उनको कॉल लगाते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर को लगाते हैं तो आप उनको 3 ईयर प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, सेकेंड ईयर को लगाते हैं तो आप उनको फीचर्स के बारे में बताते हैं कि हाउ दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड क्रैक द सिविल सर्विसेज इन अ वन गो। एंड देन थर्ड ईयर वालों को आप बताते हैं कि व्हाट आर योर टारगेट बैचेस एंड हाउ यू कंडक्ट दो टारगेट बैचेस। एंड देन आपकी कोचिंग में एडमिशन्स होते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर बिजनेस एक्सपेंड्स। और आपने एफिशिएंटली क्या किया, उस डाटा को यूटिलाइज करते हुए अपने बिजनेस में उसको यूटिलाइज किया और प्रॉफिट गेन किया। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज what are the characteristics of the big data. Characteristics, which data is going to be known as the big data. So here big data is characteristics by 3 V's. If I say volume, that is volume big data का जो volume रहेगा that is to be in terabytes, records, transaction table, मतलब काफ़ी सारा डाटा, volume, immense huge volume. And then second is variety. As I told you earlier that variety is structured, unstructured data and semi-structured data. It is going to be the variety of the data, that the data should be very much variable. And then third is velocity, batch real time. Then that data has to be processed into a real time so that the significance of the data must not be lost. So these are the 3 characteristics of the big data, which gives an idea that what a big data is actually. So it is characteristics by the 3 V's. And then so here, so big data refers to process that is used when traditional data mining and handling technology cannot uncover the insight in the meaning of the underlying data. So here the terms come, data mining. So what is difference between the data mining and big data? Data mining is simply the data integration, data management and then data analysis. और जब इसी को एक बहुत बड़े लेवल पे किया जाए, या जो कलेक्टेड डाटा है उसका जो वैरायटी हो, उसका जो वॉल्यूम हो वो काफ़ी ह्यूज हो, तो वहाँ पर हम लोग बिग डाटा टर्म्स जो हैं वो यूज़ करते हैं. सो बेसिकली डाटा माइनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ डाटा माइनिंग is a part of what, big data. And then moving to the next aspect, that is आपका application of the big data in science and technology. The question is going to be asked about the applications. So here we see the first application. Company uses big data to better understand target customer by bringing together data from their transaction. See social media data. First example, अगर आप if you use internet today, so आप क्या करते हैं कि आप एक ऑनलाइन साइट पर जाते हैं, देयर यू सी सम क्लोथ्स एंड देयर यू सी समथिंग फॉर योर सेल्फ, एंड देन आप उसके बाद फेसबुक में स्विच करते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया साइट चलाते हैं. सो देयर यू गेट द पॉपअप्स कि यू कैन बाय दिस थिंग्स फ्रॉम दिस साइट, द एग्जैक्ट थिंग दैट यू हैव सीन इन टू द रिटेल साइट, और वी कैन से दैट अमेजन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पर इस तरह की चीज़ों को ट्रेड किया जाता है, वहाँ पर आप देखते हैं एंड देन इट कम्स पॉपअप्स इनटू योर सोशल मीडिया अकाउंट्स. सो हाउ दिस हैपन्स विद द हेल्प ऑफ द बिग डाटा, दैट इज customer uses company uses big data to better understand and target customers by bringing together आपकी हैबिट से जुड़ा हुआ, आप मेल्स किस तरीके का, आप किस तरीके के साइट्स को विज़िट कर रहे हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, और इन सब को एनालाइज कर कर आपको पर्टिकुलर चीज़ें क्या दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, सजेस्ट की जा सकती हैं. तो आप इस तरीके से जो है कंपनी जो है डाटा को यूटिलाइज करती हैं. दिस इज़ आवर फर्स्ट एप्लीकेशन. मूविंग टू द
Weather prediction. So, weather prediction basically, weather is the variability in the temperature, humidity in a variety of the time. एक लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं वेदर के अंदर, तो प्रिडिक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे डाटा को क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है, उसको इंटीग्रेट करके मैनेज करके आप एनालाइज कर कर क्या करते हैं, वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं कि पर्टिकुलर वेदर किस तरीके का रहेगा. सो देयर इज़ एप्लीकेशन ऑफ द weather prediction. Sorry, there is an application of the big data in weather prediction as well as. And then business optimization. Simple example, if I will give you that you order something from a food site, so there is shown that your food is ready within this time and it will reach you after this time, 30 minute or 40 minute में वो आप तक पहुंच जाएगा. So how that time comes? सो इट इज़ बेसिकली कि आपके जो किचन में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ डाटा, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन. एंड देन आपके डिलीवरी मैन यूजुअली कितना टाइम लेता है, एंड देन फास्टेस्ट रूट जो रहेगा आपको आप तक उस सामान को पहुंचाने के लिए, उसको देखा जाएगा दैट रूट हाउ मच दैट रूट इज़ टेकिंग टाइम. सो उस सारे डाटा को एनालाइज करने के बाद फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा दैट योर प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू रीच यू एंड विद इन दिस टाइम. सो इट इज़ हेल्प इन बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन. The next point is big data is used in healthcare. Very important to cure cancer and to optimize treatment, even predicts disease before the physical symptom appears. See, nowadays we use a smartwatch which tells about the heartbeat, which tells about our blood pressures, which tells about what we are doing today. So we are basically generating a data, and that data, वो जो डाटा आप जनरेट कर रहे हैं उस डाटा को क्या किया जा सकता है, एनालाइज कर कर ये बताया जा सकता है कि आपकी जो अगर किसी भी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी या फिर फिज़िकल सिम्टम या फिर आपके बायोलॉजिकल सिम्टम्स में चेंज आते हैं, तो आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको किस तरह की बीमारी होने की आशंका है. तो दिस इन दिस मैनर, बाय सिंपल ऑब्जर्विंग द फिजिकल सिम्टम्स, आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डिजीज, सो यू कैन टेक द मेजर्स टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर disease. So here is the application of the big data in healthcare. Moving to the next part, that it is used to analyze and improve the work performance of an individual at sports, homes, work, and where the data sensors from the equipment and the wearable device can be combined with the video analytic to get insight. Traditional were impossible to see. See, if you take an example of the sports person, up their heartbeat has been measured, their sport performance has been measured on the ground, and then what workout they are doing, उन सबको एसिमुलेट कर कर उनको ये बताया जाता है कि हाउ दे आर गोइंग टू बी परफॉर्म. जैसे आपका क्रिकेट वगैरह में होता है, जैसे आपके पर्टिकुलर फिटनेस लेवल को बता देता है कि हाँ दिस इज़ गोइंग टू बी योर परफॉर्मेंस. तो उस तरह की, और वो जो परफॉर्मेंस का प्रेडिक्शन आता है वो कहाँ से आता है, वो पर्टिकुलरली इस ऐसे ही डाटा को, काफ़ी सारे डाटा जो रहता है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए जो रहते हैं, डिवाइसेस जो रहते हैं, हैंड डिवाइसेस रहते हैं आपके, उनको एनालिसिस कर कर आपको ये बता दिया जाता है कि हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर स्पोर्ट इवेंट्स, और कोई इंडिविजुअल घर है जो, ठीक है. तो दैट इज़ अवर next moving to the big data is increasingly being used by the both government and corporates in policy formation. See, in India, in the context of the India is a geographically, culturally, and we see religious wise, it is a very diverse country. So there is and every person, either it belongs to a particular geographical area, it belongs to the particular culture, they all have the different habits. So there has to be the targeted policies to tackle the problem of the each person or each culture, to tackle the problem cultural wise or geographical wise. So in this case, the big data can help in the policy formation. आप वहाँ से डाटा कलेक्ट कीजिए लोगों का कि किस तरीके का उनका बिहेवियर है, what they are doing, what are their likes and what are their dislikes, and on the basis of that you can formulate policy. And same is the case in the corporate. I give you one example for that. The
analytic Cambridge Analytica, which has given the data, which has taken the data from sorry, which has taken the data from Facebook, and it analyzed that how the voters are going to vote and which party they are going to be, which party they are going to elect. So it is simply analyzing the behavior by assimilating the information or integrating the information in the government office. And next, moving to the police security, seventh application, police security and security being used data, cyber attack detect credit frauds and track criminals. See here, you will, if you collect the data of the offenders and if you collect the data of the particular attacks that has been happened into the past, and you will analyze that data, so you will get a framework that how a particular crime comes into the existence. So from there you can analyze or predict, or you can hinder a crime, or you can stop a crime, that is any of the crime, that is साइबर अटैक अगर आपका कोई होने वाला है तो पहले कैसे हुए हैं, किस तरीके से होते हैं, तो देयर यू हैव एन इंफॉर्मेशन। एंड फिर डिटेक्ट क्रेडिट फ्रॉड्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ से हुआ, कौन सी प्लेस से हुआ, देयर आर CCTV कैमराज, देयर आर connectivity among the different branches, and there you can extract data. So there you can analyze a pattern that how the things are working, and tracking the criminals, uh, creating the database of the criminals, and there you can analyze or track the criminals that has been absconded. And now these are the basic application of the big data. I can tell you that in science and technology you are not going to ask very much technical aspect, but what you are going to ask is that simple technology, that what is big data and what are the application of the big data. So this is our video, and before going I will leave you with a question, that what is big data analytics and how it can be useful dealing with the social issues faced by India. So you can attempt this question, you can write in 100 or the 200 words, and थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज़ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।